Hello students, good morning. Welcome to our mathematics class. And students, in last period we completed our chapter number 1, right? So today we are going to start our new chapter, chapter 2, which is linear equation in one variable. Okay, which is on page number 21 in your textbook. Okay, now see what is the introduction given in your textbook. So see in earlier classes, earlier in 7th standard you have come across several algebraic expressions or equations, right? And you know very well how to solve it. So here is some examples of expressions given. So see, first one is what? 5x, 2x minus 3, 3x plus y, 2x plus, sorry, 2xy plus 5, xyz plus x plus y plus z, x square plus 1, y plus y square, right? So some examples of equations are 5x equal to 25. So see here the equality sign is given. Here this part is called as LHS and this part is called as RHS. 2x minus 3 is equal to 9. 2y plus 5 by 2 is equal to 37 by 2. 6z plus 10 is equal to minus 2. Okay. So this is called the expressions, right? Monomial, binomial, trinomial, polynomial. Okay, and here the equation is given, right? So you will remember that the equations use the equality sign. Which sign? Equality. Okay, students. So of these given expressions, many have more than one variables. Okay, for example, 2xy plus y. Here, the how many variables are there? Two. How? X and y. Two variables, right? Understood? We however receive two expressions which only one variables when we form equation. Okay students, so it means what? The highest power of the variables appearing in the expression is what? 1. Okay, see these are linear expressions. 2x, 2x plus 1, 3y minus 7, okay, etc. And these expressions are not called linear equations. See, you can see here x square plus 1, y plus y square, 1 plus z square plus z cube. So since highest power of the variable is greater than 1, okay, you can see here the power of the 3, okay, and z have how much of power? 2, okay, so it means the more than 1. So students, here we will deal with the equations with linear equation, linear expression in one variables, okay, one variable. Such equations are known as linear equations in one variable. Okay, so simply you just keep remember in your mind we have to learn about the one variables. Okay, so here x square is there, here y square is there, here y square y cube. Okay, so we will study about variables have one power. Okay, x raised to 1, x raised to 1, y raised to 1, right? Understood students? Now see here the one example is given, so let's start to understand it. An algebraic equation is an equality involving variables and it has a equality sign. You can see here. Okay, so see 2x minus 3 is equal to 7. This is the equation, and here the left part of the equality signs are called LHS and the right side part of the equality signs are called RHS. LHS left hand side, RHS right hand side. Okay, so here LHS is what? 2x minus 3 and RHS is equal to what? 7. Here 2x minus 3, so x is called a variable. Okay students, understood? Now come on next page students. See, in the equations the value of the expressions on the LHS and RHS are equal. So this happens to be true only for the certain values of the variables. These values are the solutions for the equation, right? The solutions when you put in that equations
in the value of the variables which is given or x, y, z or abc whatever. Okay, so that time you will get the same answer. Okay, equal answer. Okay. uh, okay, so how to find the solutions of an equation? So we assume the two sides of the equations are balanced. Okay, हमें क्या करना है, इसको balance करना है. We perform the same mathematical operations on the both sides of the equations so that the balance is not disturbed. अगर लेफ्ट साइड पे हम प्लस करते हैं तो राइट साइड पे भी हमें प्लस करना पड़ेगा. अगर लेफ्ट साइड पे हम माइनस करते हैं तो राइट साइड पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस. Okay, so solving equation which have a linear expressions on one side and numbers on the other side. So see, here is example 1. Find the solutions of 2x minus 3 is equal to 7. तो फर्स्ट स्टेप्स हम क्या करेंगे, ऐड 3 टू बोथ साइड्स. ओके, क्यों? बिकॉज देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. इसलिए हम क्या करेंगे, x से आसपास जो भी होगा उसको हम हटाएंगे. तो -3 को हटाएंगे अगर, ओके, तो कैसे हटाएंगे, तो उसका अपोजिट क्या हुआ, +3. देखो तो इस तरह से कट हो जाएगा. तो +3 की इफेक्ट हमने LHS में दिया है तो हमें RHS में भी देना पड़ेगा. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा तो रहा क्या, 2x इज इक्वल टू 7 + 3. ओके, द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब. +3 दोनों साइड पे हमने कर दिया है. अब नेक्स्ट स्टेप जो देखो यहाँ पे 2 और x जो है वो रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. अगर मुझे ये 2 हटाना है, आई वांट टू रिमूव दिस 2, सो व्हाट आई विल डू, so I just divide these numbers with 2. Okay, so we can reduce it. So 2 1s are 2, right. अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 के साथ डिवाइड करूँगा. सेम इफेक्ट we will give in RHS. Okay, so 2x upon 2 is equal to 10 upon 2. 2 comma is cut, 2 5 are cut, so x is equal to what, 5. Understood, student? This balance is not disturbing and we will get the solutions of this variable, value of the variable. Okay. Now see, example 2, 2y plus 9 is equal to 4. Okay. So here one more method is given, transposing. Okay. So here we transposing 9 into RHS. Okay. So 2y is equal to 4 minus 9. So 4 minus 9 is equal to -5. So y is equal to what? So 2 into 2 and y. This is the relations of multiplication. So when we separated these two into and when we putting into RHS, so it will have the opposite effect. So we put in divide. So y is equal to -5 upon 2. Okay, student. This is the solution. Now see, to check the answer, LHS is equal to, so LHS is equal to what? 2y plus 9. So 2y is equal to -5 upon 2 plus 9, right, is equal to -5 plus 9. हाँ, see 2 कट हो जाएगा तो -5 और +9 रहा. -5 plus 9 उसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4. देखो 4 आ गया. आया समझ में स्टूडेंट्स? ओके. सी नेक्स्ट क्वेश्चन, example 3. Solve x upon 3 plus 5 upon 2 is equal to -3 upon 2. So transposing 5 upon 2 into RHS. तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस. ओके, सो x upon 3 is equal to -3 upon 2. ये एज इट इज लिखेंगे. प्लस का माइनस हो जाएगा, -5 upon 2. सी डिनोमिनेटर सेम है. ओके, तो इसका सिंप्लीफाई कर देंगे, -3 -5 इज इक्वल टू -8 अपॉन 2. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 4 8 कट हो जाएगा तो -4 रहेगा. सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू -4. अभी 3 यहाँ पे डिवाइड है तो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3. इस साइड पे अगर हम कर देते तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 3. ओके, अगर हम 3 को दोनों साइड पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो भी वही आंसर रहेगा. देखो जैसे कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई 3 किया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 किया है तो यहाँ पे 3 और 3 कट हो जाएंगे और यहाँ पे -4 इंटू 3 इज इक्वल टू -12. ओके, मगर हमने ऐसा नहीं किया है, हमने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पे LHS को ट्रांसपोजिंग किया है RHS में. सो x इज इक्वल टू -12. अंडरस्टूड?
अब कैसे चेक करेंगे, तो एलएचएस में क्या है, एक्स अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो सी माइनस 12 एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ पे 3 4 से कट हो जाएगा यानी -4 रहेगा। -4 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर नहीं है, यानी हम सपोज क्या करेंगे 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 लाना है तो 1 2 जाते हैं, यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -4 मल्टीप्लाई 2 यानी -8 हो जाएगा। ओके, और +5 एज इट इज अपॉन 2, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस और प्लस, तो इस ये 5 सी, वन नंबर इज नेगेटिव, वन नंबर इज पॉजिटिव, सो subtract smaller number from greater number and put a greater number sign, so it is -3 upon 2 is equal to RHS, R required, is required, sorry। देखो आ गए आंसर, आए समझ में स्टूडेंट? ओके, सो सी एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज इन योर SW, you have to do example 1 2 3 and 4 in your notebook, and in next period we will start to solve exercise number 2.1. Is it clear? Okay, thank you, have a nice day.